2018 में प्रेसी का पेपर टारगेट किया गया था और बहुत मुश्किल, मतलब इस साल में जो एवरेज स्कोर था वो 40 to 45 था, लेकिन आपने माशाल्लाह 74 स्कोर किया। तो प्रेसी को आपने कैसे मतलब प्रिपेयर किया? To approach Pressy to is like, अच्छा, the good thing about Pressy is कि those are rules, grammar है, basic rules हैं, defined चीजें हैं सारी. This is something that you can actually work on. कि ये आप एक given time के अंदर आप इसको break down करें in 4 portions. like vocabulary का part है उसमें, एक उसमें जो major portions है ना जिन पे आपको focus करने की जरूरत होती है, that is एक तो आपकी जो comprehension है, and then Pressy. ये these are the two major aspects, और obviously translation third number पे. ये major point scoring areas हैं एक Pressy के पेपर के अंदर. If you get your Pressy down, a good title and a concise Pressy with good language, followed by a comprehension जिसमें आपने जवाब बिल्कुल to the point and accurate दिए हैं, ये इधर this is a kind of subject, if you really work for it, आप you can get really good scores. मतलब राइट। अब अपने जहन में आप 80-90 रख के चलेंगे तो 70 प्लस तो आ ही जाएंगे. मतलब ये बिल्कुल ही आप इसमें मैथमेटिकल लेवल पे नंबर ले सकते हैं, बिकॉज देयर इज ओनली वन राइट आंसर. इसमें ये तो नहीं है ना कि आपके एनालिसिस के बेस पे कोई आर्बिट्रेरी मार्किंग होगी. यू आइदर गॉट इट राइट और यू गॉट इट रॉन्ग. तो ये तो रूल्स ऑफ ग्रामर हैं, एंड पर्टिकुलरली समराइजेशन का जो एक आर्ट होता है, अगर ये आप गेट दिस डाउन तो गुड इनफ कि फिर आप इन चीजों को बिल्ड करके यू कैन रियली स्कोर वेल इन दिस सब्जेक्ट. राइट मैम, सेम क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए। हमने देखा है मोस्टली जो टॉपर्स भी होते हैं, मतलब उनके 50s में मार्क्स जो हैं वो वेरी कर रहे होते हैं। 50 को भी एक बहुत अच्छा स्कोर समझा जाता है, लेकिन 80 इज माशाल्लाह एक्सेप्शनल स्कोर। इसकी क्या स्ट्रेटेजी रही है आप? अच्छा, इस पे आई वुड वंस अगेन से द सेम थिंग कि एक तो आई नो लॉट ऑफ पीपल रीड द न्यूज़पेपर. लाइक न्यूज़पेपर जो आपका होता है उसको आपने, मतलब इफ देयर इज एनीथिंग एल्स कि आपने न्यूज़पेपर को नहीं जाने थे. एंड आई मीन लाइक लिटरली रीड इट, नॉट जस्ट section for the international news and the front page. No, I mean go through it, cover to cover, go through it, except maybe not the sports page as much, but बाकी जो है ना, go through the business section of it, go जहाँ पे आपको बहुत सारे economic indicators मिल जाते हैं चीजों के, how things are progressing in your country right now in terms of the economy. आपका I think Tuesday को आता है जो एक particularly deal करता है, dawn लगा लें या कोई, you know, sort of go through all of that. कि आपने न्यूज़पेपर को इस तरह पढ़ना है जैसे आप कोई किताब याद कर रहे हैं. बिकॉज जितनी वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन एक जर्नल में या एक न्यूज़पेपर के अंदर होती है ना, जस्ट पिक वन. यू कैन आइदर डू द इंटरनेशनल न्यूज, या वो आप सिर्फ तहम्मुल के साथ 2 hours रियलिस्टिकली स्पीकिंग इज रिक्वायर्ड टू रियली गो थ्रू द न्यूज़पेपर. और एडिटोरियल्स नहीं आपने छोड़ने किसी सूरत पे. जिसने जो बात लिखी है उसको बेशक अपनी नोटबुक में लिखें, ट्राई टू बिल्ड ऑन द एनालिसिस दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज डन. जो मुख्तलिफ कॉलमिस्ट हैं उनके ओपिनियंस, उनकी कोटेशंस याद करें, डेट्स याद कर लेंगे जी किस दिन उसने ये बंदे ने ये बात लिखी थी, किस न्यूज़पेपर के एडिशन में, इन रिस्पेक्ट टू व्हाट. दैट वाज माय स्ट्रेटजी. लॉट्स ऑफ पीपल यूज्ड टू से टू मी कि यार लगता है आप न्यूज़पेपर ही पढ़ती रही सारी तैयारी में. Because obviously I would have placed much higher had I done more of the other subjects. But current affairs में मेरी ये strategy थी कि I built on the wealth of information. खास तौर पे जो लोग international relations रखते हैं ना in combo, international law रखते हैं, sociology रखते हैं, तो they are building a lot of theoretical information जिनकी ये combo होता है subjects का. तो उस information को in the context of the newspaper समझने की कोशिश करें. Excuse me. मैम, क्रिटिकल एनालिसिस वाला पार्ट क्या आप समझती हैं कि ये जरूरी है हर क्वेश्चन में? No, not at all. बिल्कुल. अच्छा। I don't believe this. Lots of teachers would disagree with me. I know they would. But then again, बहुत सारी चीजें point toss भी होती हैं. I mean, unless and until an examiner is specifically asking you कि जी आप critically analyze this problem.
then you look at it critically. फॉर एग्जाम्पल आपसे क्रिटिकल एनालिसिस नहीं मांगा तो दैट वुड सीम लाइक आप किसी और टेंजेंट पे जा रहे हैं रादर देन आंसरिंग द एक्चुअल क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड ऑफ यू. अगर वो आपसे ये पूछ रहा है, जैसे मैं अगर आपको ये एग्जांपल दे दूं जो मैंने एक ऐसे टॉपिक की बताई थी कि दैट वुड द इलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर समवन एटसेट्रा वुड लीड टू द राइज ऑफ पॉपुलिज्म across Europe, and would that in turn lead to the rise of populism in this part of the world? ये अगर एक क्वेश्चन हम ले लें तो you don't really have to critically analyze it. You have to answer it from the perspective कि क्या एक वेस्टर्न इम्पैक्ट जो है वो एशियन इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म में ट्रांसलेट हो सकता है कि नहीं. इट्स अ वेरी स्पेसिफिक एंड अ वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर जो एक थोड़ा सा ट्रैप होता है वो ये होता है कि यू कैन सॉर्ट ऑफ बी लॉस्ट इन जनरलाइजेशन, कि you are basically giving aspects of a one particular problem from different opinions without giving your own specific opinion. It's a safe play answer. मतलब आप you are protecting yourself from the judgment of the examiner by giving him all the possible information pertaining to that subject without actually sharing your opinion. तो जो आजकल के जो एग्जाम्स आ रहे हैं जो मैंने भी लास्ट 2-3 दफा भी देखे हैं तो उसमें तो दे आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर योर ओपिनियन. They want to know where you stand on that issue. And उस issue के आपके opinion को how are you supporting that position? That is more important than critical analysis. Rather than giving general information from left, right and center and flaw opinion और उस पे economic, gender और उसके वो लगा के कि जी मतलब इस रूफ के अंदर इस टॉपिक को हम यूं देखते हैं. So that's you are just looking at it from a very distant lens. That's not an opinion per se. तो खास तौर पे ओपिनियन के क्वेश्चन में तो अगर आप अटेम्प्ट करें तो ये हरकत हरगिज मत करिएगा, नंबर कम ही आए जितना मर्जी लिख लें. राइट मैम.